धन वही सुख का कारक होता है जो धर्म के मार्ग से व्यय होता है। यानी जो जिसका धर्म है उसको सही दिशा में, गरीब के लिए, विकास के लिए। मगर क्या बताएं मान्यवर, जो लोग धर्म के समूल नाश का संकल्प लेते हो उनके लिए जो संपत्ति है वो भी विपत्ति बन जाती है और वो सुख कारक बनने के रास्ते पर नहीं चल पाती है। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जैसी युक्ति बनाई है उस कारण से जो आर्थिक विपत्ति थी वो अब संपत्ति की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा मान्यवर, कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब आप लोग आर्थिक विषय की बात करते हैं, मगर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कई बार आर्थिक विषयों की बात करते करते लोग किसी दूसरे विषय पे चले जाते थे। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि एक दौर था मान्यवर जब भारत की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाया जाता था। क्या कहा जाता था? ये 2% से ऊपर कभी ग्रो ही नहीं कर सकते। इसको कहा जाता दिस इज द हिंदू ग्रोथ रेट। ये कह के हमारा मजाक उड़ाया जाता था कि ये कभी 2% से ऊपर ग्रो नहीं कर सकते मान्यवर। मगर जब से हम लोग आए हैं, यानी जो लोग कहते हैं कि उन्हें हिंदू ग्रोथ रेट ज्यादा अच्छी लगती थी, अब ये 7.8% की हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है, क्योंकि अब वो लोग आए हैं जो हिंदुत्व में विश्वास करते हैं। और मैं ये भी एक याद दिलाना चाहता हूं, इसे कोई संयोग माने या दैव योग माने मान्यवर, जब भारत स्वतंत्र हुआ इस बार की दीपावली के लिए मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, एक नया परिवर्तन भारत का जानते कैसे आया? ये सब कुछ जनता के सहयोग, समर्थन और मोदी जी की युक्ति के साथ तो हो ही रहा है। एक नया स्वरूप भी भारत का उभर रहा है। वो क्या है? जब मान्यवर देश आजाद हुआ तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पे ताला लगा हुआ था। हमारे तुरंत विपक्षी लोग कहते साहब कुछ था नहीं, बहुत कुछ हम कर नहीं सकते थे। और जब ताला खुला उस समय श्री राम लला विराजमान भी ताले में ही थे। जैसे ही राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था के अंदर भी नया परिवर्तन शुरू हुआ। 90 से 92 का ही दौर है अर्थव्यवस्था में भी बदलाव का, भारत की अर्थव्यवस्था के खुलने का, भारत की राजनीति की व्यवस्था के भी बदलने का। और यही वो दौर है जिस समय विवादित ढांचा भी गिरा और नेहरूवियन मॉडल भी समाप्त हुआ। यानी अगर आप देखें तो वो दौर था जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 1 बिलियन पे था। परंतु मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, कुछ लोग लगेगा ये तुलना है क्या, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, उसके बाद एक बड़ा दौर आया जब 2003-4 में, आप याद करिए, हम करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बने। 2003-4 के चौथे क्वार्टर में हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हुई और इंडिया सक्सेस स्टोरी 2003-4 में कही जाने लगी। यही वो दौर था जब खुदाई हुई और 70 खंबे निकले थे, जहां से साबित हो गया था कि श्री राम लला विराजमान के पास ही वो मंदिर है। अब आप आइए साहब, उसके बाद 2019 में जब जजमेंट आया तो तब 1 बिलियन था, जब खंबे निकले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन था, अब मोदी जी के नेतृत्व में 500 बिलियन पहुंच गया। और इतना ही नहीं मान्यवर, अब जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम नंबर 1 के देश हैं और चांद के अछूते कोने को छूने वाले देश भी बन गए हैं। और अब अगर आप देखें तो हम G20 में सबसे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। यह कह के मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे संयोग होते हैं जिनको देखने के लिए एक अलग दृष्टि चाहिए, जिसके लिए रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सुमति कुमति सबके उर रही, यानी अच्छी मति और बुरी मति सबके मन में रहती है। नाथ पुराण निगम यह कहीं, ये पुराण और उपनिषद ये बताते हैं। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो इसलिए जो जो हम धनात धर्मात तथा सुखम की दृष्टि के साथ संपत्ति बढ़ते गए, वहां इस देश में संपत्ति आती गई। ऑन द लाइटर नोट एंड ऑन द सीरियस नोट मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम सब चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी बने और मां लक्ष्मी की कृपा इस देश पे बनी रहे, पर मां लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। और मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि इस बात को भली भांति समझ लीजिए, आप जितने आरोप प्रत्यारोप मोदी जी के ऊपर लगाते हैं, आप देखिए पूरी दुनिया में एक सुनामी आई हुई है। चाइना, अमेरिका जैसे देश जूझ रहे हैं। ब्रिटेन में यह कहा जाता है कि जब जाड़े का मौसम आ गया है कि दे हैव हार्डली मनी आइदर टू हीट और टू ईट, यानी या तो खा लो या बिजली का बिल पेमेंट कर लो। उस दौर में, मैं अगल बगल वालों की बात नहीं कर रहा हूं कि श्रीलंका और पाकिस्तान में क्या हो गया। जनाब, हमारा कैप्टन कितनी कुशलता के साथ
इस सुनामी से भरी लहरों में लेके जा रहा है। मगर क्या कह रहे हैं विपक्ष वाले? अरे अगल बगल के पलटे जहाजों को मत देखो, दूर दराज के डहते जहाजों को मत देखो, ये जहाज के अंदर मुझे कुछ हिचकोले क्यों नजर आ रहे हैं उसके ऊपर देखो। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा अपनी सरकार की तरफ से, और देखिए ये भी एक संयोग है, जब मैंने राम मंदिर की बात कही, संयोग से इस समय हमारी वित्त मंत्री जी के नाम में भी सीता भी है, रमण भी है और निर्मल भी है, यानी नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम मोदी जी की तरफ से आपको एक लाइन कहना चाहेंगे अर्थव्यवस्था पे, जो आप लोग कहते हैं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। और फिर मैं एक बिंदु और कहकर, एक पंक्ति और कह के बात को समाप्त करता हूं। G20 में जो लोगों ने देखा उससे बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब हमारे साथी समझ पाए न समझ पाए, भारत की जनता उसे समझ रही है और वो उत्तरोत्तर उस दिशा में आगे आ रही है जो नए भारत का स्वप्न मोदी जी के नेतृत्व में साकार होता दिख रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। हम अर्थव्यवस्था के जो स्वरूप में जा रहे हैं, स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, उस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद। श्री पी चिदम्बरम सर, 10 minutes. Thank you, sir. More than enough. So after listening to the learned professor of Lucknow University, I'm sure that all of us are convinced that Amrit Kal has begun. And by going the number of times he was applauded by the treasury benches, I think he should be in line for a ministership now. I wish him well. If all is well in the world and God is in his heaven and India is growing at the fastest rate in the world, why is the impact of that growth not felt on the ground? This is the question which my friend Derek asked, and I try to supplement that in the few minutes I have. We are a large economy. We are growing at the fastest rate in the world. We are innovative. We have the largest FDI coming into the country. But why is it not seen on the ground? And I specifically want to ask, why is it not seen in the inflation numbers and the unemployment numbers? Let's take only those two. Now, what are the unemployment numbers? And I'm going by official numbers. The government doesn't like the CMIE numbers, so we'll avoid the CMIE numbers. Mercifully, the BJP no longer talks about 2 crore jobs being created every year. Thank you for small mercies that you are not making these tall claims. That's one of the election jumlas. I didn't know the word jumla unless I heard it first from the Honorable Home Minister. Now let's focus on a few numbers. This is official numbers of the Periodic Labour Survey. The worker population rate in this country is 46%, which means the number of workers to the population is 46. It's quite low, but let's take it as acceptable
given the various circumstances of the country. Of the worker population, that is 46% of the total population, male worker population is 69%, but the female is only 22%. Of the worker population, less than 50% actually work. So if you apply 50% on 46%, effectively it means only that 23% of the people सभी work. प्रकार के खबरों के लिए जुड़े रहिए सरपंच This has टीवी more or के less been साथ। constant in the धन्यवाद। last 9.5 years चैनल of the को BJP. सब्सक्राइब करना ना भूलें Now, why एवं I वीडियो को ask, लाइक और if we शेयर have such अवश्य करें। scintillating growth, why is this numbers not improving? Now, my learned friend Derek O'Brien gave the numbers. In the age group 15 to 24, the unemployment rate is 23.22. Among graduates under the age of 25, the unemployment rate is 42%. Graduates between the year 25 to 29, it is still 23%. Graduates between the years of 30 to 34, it is close to 10%. It's 9.8%. A graduate in this country, and I spoke at a college, I said, I'm not frightening you, but you will graduate here. But unfortunately, 1 out of 4 will be unemployed. And even until the age of 35, 1 out of 10 will be unemployed. Why is this spirited growth, scintillating growth, not turning into jobs? That's the first question I'm asking. And keep in mind, most employment in this country is self-employment, 57%. Regular wage employees has declined from 24% to 21%. Apart from the quantity, the quality of employment is also poor. So I want the government to answer, why is this 10-year splendid period not reflecting in employment figures? The second one is about price rise. And on price rise, yes, inflation has come down in the last couple of months. I'm not disputing that. But please remember that even today, the CPI inflation is above the tolerance limit of 4 to 6% of the RBI. Food and light inflation is 4.3. Fuel and light inflation is 4.3. Food inflation is 9.2. What does the combination of high unemployment and high prices, what does it mean? It means that, and I think Derek hinted at that, it means that there is a cut, the impact will be felt in the cut in domestic consumption, cut in household consumption. The impact is you borrow more. Credit growth is driven in this country, according to the RBI, on personal loans and gold loans. The net financial assets of households has plummeted to the lowest level, 5.1%. What does this mean? It means that people are consuming less, people are borrowing more, they are liquidating their household assets and savings, and the net financial savings has come down to a historical low, a 50-year low of 5.1%. It also shows up elsewhere. It shows up, for example, in matters like child malnutrition. I'll just give you the numbers of child malnutrition, and are shocking numbers. They're shocking numbers of child malnutrition.
Today, among children, you will find that 16.3% of children are undernourished, 19.3% of children are wasted, 35.5% of children are stunted. It shows up again in the food that the children get. And add to that Derek's numbers, under the age of 5, so many people die because of hunger. Why is it not showing up in consumption? It also shows up in education. Their mental growth. Today, in a class 8, only 70% of the children can read a class 2 text. And only 45% of children can do basic arithmetic. In class 8, you can't do basic arithmetic, you can't read a class 2 text. So ultimately, the question is, who is this government for? Is it for the poor, or is its policy so skewed that it is favor of the rich? The numbers are undisputed. I have not seen a single government spokesman dispute these numbers. 23 crore people of India are poor when the poverty bar is very low. Poverty bar is 1,286 rupees per month per person in urban areas and 1,089 rupees per month per person in rural areas. With such a low poverty bar, 23 crore people are poor. And it shows up in inequality. The bottom 50% owns 3% of national wealth and gets 13% of the national income. And the top 5% owns 60% of national wealth, and top 1% holds 22% of the national income. So ultimately, this growth is unacceptable. This kind of growth is unacceptable. We need more balanced growth. But then I end with the final question that I've been asking the government for many, many months, for which I have not got an answer. I hope I will get an answer today. In 91-92, India's GDP was 25 lakh crore. In 12 years, in 2003-04, it doubled to 50 lakh crore, doubled. In 10 years, under UPA, it doubled to 100 lakh crore, 25 to 50 to 100. I ask one simple question. If you are growing at such a fast rate, such a record-breaking rate, will you 100 lakh crore? The finance minister, honorable finance minister knows the answer. I know the answer. You know the answer. But I want the honorable finance minister, to say the answer is known to the finance minister, the former finance minister. I am out of it. Whether the GDP will double in their Amrit Kal period under the NDA government, will it grow to 200 lakh crore by March 2024? And I want the honorable finance minister to answer that question. Thank you, sir. Dr. Kanimoji NVN Somu. Honorable Chairman, sir. 9 minutes. Yes, sir. Honorable Chairman, sir. I'm wondering the timing of the discussion on the economic situation in the country. In today's Hindu business headlines, we had a headline stating that Indian banks writes off rupees 10.6 lakh crore in 5 years, and 50% of that is being linked to the large corporates. This is how the corporates gets their freebies, is one thing which we have to make a note. The India's DGP crosses $4 trillion for the first time.
Sir, there is no doubt the Indian economy is growing. India is set to outpace Japan and Germany shortly as the fastest growing economy in the country. And the government also claims that the GST collections has touched a record high, but always Tamil Nadu has got the brunt of not getting it back what we give it to the Indian government. But the pertinent question of whether the fruits of the GDP growth has reached India's poor and lower middle class. No, the government has failed miserably in managing the economy. What is the use of boasting that India's foreign exchange reserves have increased? Indian economy grows faster than US economy with 7.6% GDP growth when 80% of the population is suffering in poverty. It's not a boon, it's a curse. US is 37.5 trillion economy with a population of 33 crore, but India's population is 142 crores. In terms of per capita GDP, India ranks 139th in the world, and India's external debt is 172 lakh crores. India has witnessed a surge in private debt, especially in the corporate and the household sectors, due to the easy credit availability and low interest rate. During the UPA's 10-year rule, only rupees 2.20 lakh crore was written off. For a kind information, as of now, the Indian banks have written off as rupees 10.6 lakh crore in the 5 years. However, this also possesses a risk of default and financial instability, especially the income growth slows down or 6% of national income in 2019, up from 37% in 1980. Similarly, the top 10% of wealth holders owned 77% of total wealth in 2019, up from 66% in 2000. High inequality can lead to social unrest, political instability, and lower economic growth. Unemployment rate has touched 10%. The unemployment of youth aged between 18 to 25 is touched abnormally low to 25%. Only a very small percentage of people are lucky to get a regular employment in government and private companies. Sir, more than 40 lakh government jobs are vacant, and the government has promised to create 2 crore new jobs every year, could not fill even 10 lakh vacant jobs. Too much emphasis on privatization of government and public sector companies will destroy the social structure of the country. The reservation system followed in our country is indispensable for upholding social justice and removing inequality. Reservations are not provided in any private sector, and if the governments keep on privatizing the reservation system, will derail and the social justice and equitable distribution of wealth is under threat. Therefore, I urge the government to introduce a bill to provide reservation in the private sector before it sells everything. This government behaves like a good salesman, but not a good Samaritan. The economic disparity and the social inequality is witnessing a worst phase in independent India. When the world thrives on dollar economy, the continuous fall in the value of Indian rupee against US dollar can do a lot of bad than good. My senior colleagues in Treasury benches criticized vehemently the then government's failure to provide a stable rupee in 2013. You have promised to people of India that when you come to power, you will stabilize the value of Indian rupee against US dollar and bring the value of $1 US to rupees 40. What happened after your government captured the power in 2014 is a history known to everyone. Our Honorable Finance Minister has even said in public Indian rupee is falling, only US dollar is raising. This is a candid statement accepting the failure of the government to stabilize the value of Indian rupee against the US dollar. Due to the extreme rupee-dollar rate fluctuations, India's nominal GDP affects badly. The export gain is lost by a mile through import loss. The value of India's import is much higher than export. The widening gap in trade deficit is not good for any country. India is no exception. Our country's trade deficit with other countries, especially China, is going to affect the Indian economy very much.
Too much dependence on imports from China will destroy the prospects of indigenous manufacturing and development. I think the warning bell is ringing. It's a wake-up call for the government to reduce the country's over-dependence on China in importing. Another time bomb of our country is facing at the moment is the escalating prices of the essential commodities and food items. The World Economic Forum predicts that the cost of living crisis sparkled by fluid and food price hikes will hit women the most. The rising prices have hit almost everyone, either it be a milkman, a fish vendor, an auto or a taxi driver, or the pensioners. All are affected very badly, but the union government is still having a blind eye to the precarious situation in the country right now it is in. Transportation cost has gone up by 20 to 30% due to the steep hike in the prices of petrol, diesel and CNG. It is causing a ripple effect on the vegetable prices. The steep hike in the CNG prices had made life miserable for the auto and cab drivers. CNG is now sold over rupees 69 per kg. We demand the government should provide rupees 35 per kg subsidy on the CNG so that they can survive. The agriculture sector is the backbone of our country. Nearly 70% of the total population thrives on agriculture and agro-based activities. The government once claimed that it will double the farmers' income has done too little to save the life of the farmers of this country. The increasing incident of farmers committing suicide is a national shame. The government should address the needs of the farmers as a top priority because the whole country depends on them. If the government can't stop its farmers committing suicide, if the government can't uphold social justice and socio-economic equality, if the government cannot control the escalating prices of essential commodities, if the government can't provide employment opportunities for 1/3 of its youth population, if the government can't provide affordable health care to its poor citizens, there is no point in boasting that our country is fastest growing economy in the world. Sir, among the Indian states, Tamil Nadu is the second largest economy and third largest exporting state, contributing 9% to the India's net exports. Under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, the Industries Department of Government of Tamil Nadu is taking several proactive measures as several foreign companies interested in signing agreement with TIDCO, an industrial arm of the Government of Tamil Nadu. In Tamil Nadu, 179 projects at a cost of rupees 8.6 lakh crore relating to Tamil Nadu has been included in the National Infrastructure Pipeline. These projects will be implemented in the next 5 years. Thus, Tamil Nadu is emerging fast as a champion economy and advanced industrial state in the country. I urge the government to allocate adequate funds and to provide all necessary support to Tamil Nadu to release an unprecedented growth and pinnacle of success in economic growth, industrial development and employment generation. Thank you, sir. Thank you, Dr. Kanimoji ji. Dr. Ashok Kumar Mittal ji, 9 minutes, 9 minutes. सभापति महोदय, आज मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के माध्यम से अपने देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक हलवाई का बेटा हूं, एक दुकानदार का बेटा हूं। तो मैं आज जो इस पर चर्चा करूंगा, एक अर्थशास्त्री होने के नाते नहीं, एक आम आदमी पॉइंट के हिसाब से मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा। मुझसे पूर्व मेरे वरिष्ठ साथी बोल रहे थे, बता रहे थे कि हमारा देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा जीडीपी की ग्रोथ दुनिया में सबसे ऊपर है, हमारा किसान खुशहाल है, युवा को रोजगार मिल रहा है और देश का विकास हो रहा है। लेकिन मैं वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था को एक आम आदमी के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूँगा 4 पंक्तियों में। तनख्वाह का कुछ रुपया राशन में गया, कुछ खर्च हुआ दवाई पर, थोड़ा बहुत लेन देन हुआ, बाकी खर्च हो गया बच्चों की पढ़ाई पर, मोहताज हो गया आम आदमी फिर से पाई पाई पर, मोहताज हो गया आम आदमी फिर से पाई पाई पर। समझ में नहीं आता कि क्या बोलूं देश की अर्थव्यवस्था पर। हमें सिर्फ फिगर्स नहीं देखने, हमें फैक्ट्स भी देखने होंगे। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन हमारे यहाँ 80 करोड़ से अधिक लोग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। पिछले सप्ताह भारत सरकार ने इनिशिएटिव लेते हुए
80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की सुविधा अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाई, बहुत बढ़िया किया। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखें कि ये जाहिर करता है कि अभी तक 80 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर नहीं आ पाए कि उनको मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। हम ग्रोथ को जीडीपी से एक्सप्लेन करते हैं, जीडीपी का, लेकिन एक आम आदमी का क्या मतलब जाता है? गैस, डीजल, पेट्रोल, क्योंकि इसी से उसका घर चलता है और इन सब की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमने G20 का बहुत सफल आयोजन किया, ये गर्व की बात है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 121 देशों में से 111वें नंबर पर आते हैं। भारत सरकार का मिशन है कि आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। कहा जाता है कि मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, उसमें एक तत्व भी कम हो तो हम रोगी हो जाते हैं। ऐसे ही अर्थव्यवस्था जो भी मेरे हिसाब से 5 बुनियादी तत्वों से बनी है। सबसे पहले मैं दुकानदार भाई की बात करूंगा। हमारे देश में 10 करोड़ से ऊपर दुकानदार परिवार है, 10 करोड़ से ऊपर। उनके साथ साथ मैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करूंगा, जो हमारी 10 करोड़ से ऊपर महिलाएं, बहनें, माताएं सेल्फ ग्रुप चलाती हैं, 20 करोड़। दूसरी तरफ यहाँ हम जाएं, चांदनी चौक एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है और वहाँ पर 90% वस्तुएं चाइना की बनी हुई बिकी हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मेक इन इंडिया में हम अभी तक क्यों पीछे हैं। सिंपल आंकड़े बताते हैं, भारत चाइना से 57.51 बिलियन का इंपोर्ट करता है और सिर्फ डॉलर 57 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है और सिर्फ 9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। तो मुझे समझ नहीं आता ये हमारी कैसी आत्मनिर्भरता है। मल्टीनेशनल अमेज़न और दूसरी कंपनियों ने भारत में आके हमारे दुकानदार भाई, हमारे सेल्फ ग्रुप वालों का बुरी तरह से प्रॉब्लम में ला दिया है, क्योंकि यदि वो कोई भी सामान इनके थ्रू बेचते हैं तो 30% कमीशन हमें अमेज़न को देना जाता है, जो कि विदेशी कंपनियों के विदेशों में जाता है। हमारा दूसरा तत्व है किसान भाई। हमारे भारत सरकार डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम कर रही है और काफ़ी कुछ कर रही है, बट दूसरी तरफ अभी कल ही होम मिनिस्ट्री ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े जारी किए और उसमें भारत में पिछले वर्ष 2022 में 1 करोड़ 70 लाख सुसाइड हुए, जिसमें से 50 से 60 हज़ार किसान भाइयों के या हमारे मजदूर भाइयों के थे। वो ऐसा क्यों हो रहा है? वो ऐसे क्यों मजबूर हो रहे हैं? आउटस्टैंडिंग लोन्स, इन सब बातों की वजह से। और हर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड पर 74 हज़ार रुपये का आउटस्टैंडिंग लोन है। तो मुझे लगता है ये एक चिंता का विषय है। हमारा तीसरा तत्व है हमारे युवा। हम यंग युवा, हमारे यहाँ यूथ है। डेमोग्राफिक डिविडेंड लग रहा है कहीं हमें डेमोग्राफिक डिसास्टर ना बन जाए। उनके लिए हम रोजगार के उतने अवसर पूरे नहीं कर पा रहे। बेरोजगारी की सीमा बढ़ गई है, परसेंटेज बढ़ गई है, 8% हो गई है और हमारे युवाओं को गलत तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। और साथ साथ इसके हमारे इंटेलिजेंट लोग बाहर विदेशों में जा रहे हैं। अब मैं चौथे तत्व पर आऊँगा, मजदूर वर्ग। देश की अर्थव्यवस्था का मूल है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन का काम हमारे मजदूर भाई ही करते हैं। 2019 में मनरेगा के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसमें बताया गया कि 71% मजदूरों को कोई रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। 54% मजदूर भाइयों को पेड लीव नहीं मिलती और ग्रामीण क्षेत्रों में 77% और शहरों में 80%
मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। और हमारा 5वां तत्व आएगा MSME या हमारे छोटे उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री। भारत सरकार जॉब क्रिएशन की बात करती है, लेकिन हमारे कितने उद्योग बंद हुए? 19,000 से ऊपर MSME 2021 और से मार्च 2023 के बीच में बंद हुए हैं, जिससे तकरीबन 1.5 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। इन सब चीज़ों को मैं चाहूँगा मंत्री महोदय ध्यान दें, और कुछ मैं सजेशन देना चाहूँगा कि हमारा देश एक महान देश है, हम में क्षमता है, पोटेंशियल है कि हम सुपर पावर बन सकें। तो इसके लिए मैं उम्मीद करूँगा कि सबसे पहले हमारे किसान भाइयों के लिए हम थोड़ा सा ध्यान दें। कृषि को सोशल सर्विस ना बनाएं, उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे उसको हम आत्मनिर्भरता भी किसानों में पैदा करें। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें आएगा किसान भाइयों को के लिए MSP गारंटी के लिए सरकार कानून बनाए और उनको प्रॉफिटेबल बनाए और उनको सस्टेनेबल बनाए। दूसरी हमारी शिक्षा व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। एक ज़माने में हम सुपर पावर कहते थे, हमने तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को दिए, जबकि दुनिया में विश्वविद्यालय हुआ ही नहीं करते थे। लेकिन अब हमारा सिर्फ एजुकेशन पर खर्चा 2.8% है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको बढ़ाकर 5% किया जाए GDP का। बाकी हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है, उसमें यदि मैं चाहूँगा सरकार जो कैसे उसको डिवाइड कर सकती है अमीरों और गरीबों में, सो दैट जो सभी वर्ग को पूरा जो देश की तरक्की का पूरा हिस्सा मिल सके। और अगली बात मैं चाहूँगा अपने दुकानदार भाइयों के लिए कि सरकार उनके लिए कानून लाए जिसमें सोशल सिक्योरिटी, वर्किंग कैपिटल और अन्य तरीके से हम उनकी सहायता दे सकें। मैं उम्मीद करूँगा कि मंत्री जी इस पर पूरा ध्यान देंगे। और मैं अपनी बात एक दो पंक्तियों से ख़त्म करना चाहूँगा कि सरकारी फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े भ्रमित हैं, ये दावे किताबी हैं, बड़ी है दूरियां अब तक अमीर और गरीब में, किसी के कुत्ते पर रेशमी चादर, कोई बिन कपड़े बेहाल है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी। माननीय श्री सुजीत कुमार जी। माननीय सुजीत कुमार जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, at the outset, I would like to congratulate our countrymen because recently we reached the $4 trillion economy benchmark for the first time. And sir, we have become, it's well known that we have become the 3rd largest economy by purchasing power parity index and the 5th largest economy by market exchange rate. Sir, we have amply demonstrated to the world our inherent strength facing the twin challenges of the Russia-Ukraine conflict and also the COVID challenges. Sir, we are all set to achieve between 6.2 to 6.5, 6.8, we can debate on the numbers, but very healthy growth numbers in FY 23-24. Fastest growing economy, many speakers have already spoken about it. We are the fastest growing large economy in the world. And sir, we also are very likely to become a $5 trillion economy by 2027. And sir, if the dots are connected well, the economic dots are connected well, then we, by the end of the Amrit Kal, by the end of 2047, we will be a developed economy as well. Sir, now this is possible, sir, if, as I said, we connect all the economic dots properly. But in my view, sir, there are 3 things that the government needs to focus on to achieve these goals and the vision. Sir, first and foremost, fulfilling the aspirations of our citizens, particularly our youth and women, and I'll elaborate on it at length. Secondly, sir, boosting the MSMEs. Sir, today, Honorable Member Lakshmikant Bajpayee ji also during 0 hour spoke about the need to protect and support our MSMEs. And sir, I'll second him. I cannot agree with him anymore. Sir, we need to strongly boost our MSMEs and give impetus to our job creation and entrepreneurship. And third and foremost, sir, is the need to focus on education, innovation and R&D. Sir, in her budget speech, Honorable Finance Minister also gave priorities to these 3 areas that I have just referred to.
But, sir, I do find some lacuna, and I'll talk about it, sir. So let me go to the economic empowerment of our youth and our women. Sir, the Honorable Prime Minister spoke of 4 castes recently during one of the election speeches. He spoke of youth, women, farmers, and the youth, and the poor, sorry. Sir, let's come to the youth. We are the most youthful nation in the world. 2/3 of our population is under 35. Half of our population is under 25. When Honorable Member Ashok Mittal was speaking about the demographic dividend turning into demographic disaster, so that's a reality. That's a genuine concern that we have today. We need to take care of our youth, job creation, unless we want to see a disaster, demographic disaster. So talking of empowerment of women, sir, female worker population ratio is only 22%, which Honorable Member Chidambaram was talking about. Sir, I would like to refer to a model of women empowerment from my state of Odisha, sir, where 70 lakh women have been economically empowered over the years, and the self-help groups that they were part of are now becoming SMEs, small and medium enterprises. So this is a verifiable model of economic empowerment for women, which I think can really help us to achieve our economic goals. Thirdly, sir, doubling farmers' income. Sir, the government had spoken about doubling farmers' income by 2022. It has not happened. Sir, in Odisha, we have already doubled farmers' income a couple of years ago. In fact, we have received the Krishi Karman Award many times by Government of India, which showcases the importance and impetus that we have given to farmers. And sir, talking of inclusive growth, sir, there was a wide gap between the per capita income, national per capita income, and the state's per capita income in the year 2020-21. Today, sir, that has been drastically gapped. The gap has been drastically bridged. And today, sir, we are almost at par with the national per capita income. And sir, I'll give you statistics. Sir, the development expenditure of Odisha has increased more than 20 times over the last 20 years. Sir, more than 20 times over 2 decades. This is a huge humongous spend on development expenditure, which is shown in all our indicators and parameters. Sir, I'll come to the focus on education, innovation, R&D. Sir, way back in the 60s, Kothari Commission had recommended that we spend 6% of our GDP on education. We are nowhere close, sir, today. Sir, I will compliment the government of the day, and particularly Honorable Education Minister, that in this year's budget, the budget estimate of education is 1,13,000 crore roughly, which is 13% increase over the revised estimate of 22-23. Definitely, sir, this is the highest increase in outlay in expenditure over the RE of the previous year. But, sir, it's still not enough. It's only 2.8% of the budget, of our union budget. In contrast, sir, in Odisha, 30,000 crore has been earmarked for education in this year's budget, which is 12.3% of the total budget outlay of the state. 12.3% of the total budget outlay of the state is for education, sir. Sir, I think inspiration can be drawn by union government from Odisha on this. Sir, I'm extremely passionate about education, but I was sorry and sad to note that in her budget speech, the Honorable Finance Minister spoke about 7 priorities, what she called Saptarishis. But education was not one of the priorities or Saptarishis. And we all know, sir, the foundation of any nation is education. No nation can progress economically, socially, or otherwise without focusing on education. So this is why I urge again the government to focus on education. Sir, I'll come to PM Poshan. Sir, Honorable Member Chidambaram ji spoke about, sir, child malnutrition. He gave some numbers: 16% undernourished, 35% stunted. These are numbers. Sir, again, I'm sad to note that the budget estimate for 23-24 for PM Poshan is 9% less than the RE, the revised estimate of 22-23. Sir, this will definitely reflect in poor learning outcomes and educational outcomes. Sir, I'll come to, sir, R&D. Sir, Honorable PM has often spoken about India becoming a $1 trillion digital economy, which will be roughly 20% of our economy when we become a $5 trillion economy. But, sir, tell me, sir, which nation can become a digital economy without focusing on R&D? And today we spend only 0.7% of our GDP on R&D. Comparable numbers, sir, Israel 4.9, US 4.5, sorry, US 3, South Korea 4.5, China roughly 2, we are only at 0.7. Sir, I compliment the government. I laud them because they brought in the Anusandhan National Research Foundation bill.
And Prime Minister has often spoken about Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. But sir, we need to really focus on Anusandhan or research if we want to become a developed economy in the next couple of decades at least. And sir, finally, sir, I'll come to the focus on MSMEs. Sir, we are growing, no doubt, but it is not a job-led growth. Sir, I'm afraid that is becoming a job-less growth. Sir, that is because, sir, our focus on MSMEs is not to the extent what it should be. Sir, today MSMEs are crying for capital. They do not have access to capital. Sir, there are statistics, sir, that if the loan amount is less than 1 crore, then the default is roughly 1%. But if the loan amount is more than 100 crore, then the default is over 40%, sir. So who takes loans over 100 crores? It's the large enterprises. But the MSMEs take loan less than 1 crore and their default rate is less than 1%. But still, sir, we have not done justice to our MSMEs by giving them access to capital, by giving them access to technology. So, sir, I'll again urge the government, sir, MSMEs are the job creators of our country. They create wealth for the nation. They contribute 30% to our GDP. Sir, they roughly create 123 million jobs. Sir, that is roughly 12 crore jobs. Still, we are neglecting our MSMEs. Sir, if we have to really focus on the economy, then we need to focus on the MSMEs because, sir, and sir, finally, sir, since you have, sir, since my time is over, sir, I'll just conclude by saying that, sir, India, that is Bharat, is a union of states. So if we have to grow socially and economically, then we need to take the states along. And this is why, sir, my Honorable Chief Minister, Sri Naveen Patnaik, has always believed in the philosophy of cooperative federalism. Sir, for him, empowering the 4.5 crore Odias socially and economically has been his highest duty. And this is why, sir, he has been appealing in various forums through the parliament and otherwise that, sir, we need support from the government of India to better our tele density, to better our railway density, to have, sir, more funds which we are Please conclude. Please conclude. Sir, I'm concluding, sir. So this is what. Sir, the Honorable PM has spoken about Purvodaya, which is the rise of the East. Sir, how can we have Purvodaya unless, sir, states like Odisha are supported economically by Government of India by, sir, giving us the funds that are due to us, by, sir, giving us the tele-density, the highways, the banking facilities that we, sir, badly need. Thank you. Manni Sri V. Vijay Sai Reddy ji. Deputy Chairman, sir, thank you very much. And I also thank my party president and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Y.S. Jagannath Reddy Garu, for giving me an opportunity to speak on this particular subject, sir. Sir, for the last 10 years, India has been on the brink of massive economic transformation, which the opposition is not in a position to realize. Sir, for the last 10 years, again, we have grown from being 10th highest GDP to 5th highest GDP in the world, which my colleague, Honorable former Finance Minister Chidambaram couldn't realize it. Sir, in the next 5 years, under the leadership of Modi ji, we are poised to become third largest economy in the world, crossing 5 trillion mark. Please, Mani Jairam ji, बैठ कर बात नहीं. Please, you speak to the chair. Sir, Deputy Chairman, sir, India continues to retain its fast-growing economy status even in the face of global economic slowdown. And we have faced the COVID situation. Even during COVID situation, there is no economic stride, and it continues to grow in the economy. Sir, last year, our GDP growth stood at massive 7.2%, which was twice the average of emerging market economies. And our Honorable former Finance Minister extensively spoke about the GDP. And he was all along talking negative about the GDP, and he couldn't realize that there is a growth. And currently, we have surpassed the market expectations and registered a 7.6% growth during second quarter of the this current 2023-24. Sir, and coming to the tax collections, which the opposition has to realize the importance. There is a significant growth in the tax collections
that has become the norm, and this has fueled the economic growth, sir. Sir, within 10 years, the direct tax collections have increased by 160%, and from 6.4 lakh crore in 2013-14 to 16.6 lakh crore in financial year 2022-23. Sir, this year, this 6 months from April to September, tax collections increased by 18%. Sir, till now, the GST collections, now up to this direct taxes and then indirect taxes, till now, GST collections for this financial year stands at 13.3 lakhs crore, averaging 1.66 lakh crore monthly. This is whopping 12% hike over the last year. The increase in tax collections without substantial tax hikes goes to show that the government efficiency in improving our tax compliance and expanding the tax base. Sir, even there is no applaud from the treasury benches. Opposition, I'm very sure they will not applaud. Sir, coming to the digital payments. India continues to dominate the digital payment landscape. Sir, we recorded 89 million digital transactions in 2022, which is more than 4 leading countries combined together. Sir, this accounted almost half of the global real-time payments. And sir, and I also should, up to this it's all positive points, sir. From now, I have to tell the negative points also, and at least to satisfy my friend Jairam Ramesh. Sir, we must not be complacent with our achievements. And sir, many issues continue to hinder the India's economic growth, sir. Sir, the first I would like to point out among the negatives is depreciating rupee, which is very, very alarming. Sir, rupee was worst performing Asian currency in 2022. Sir, for the first time ever, the value of rupee crossed 80 against the dollar. Currently, it stands at 83.4, which is very, very alarming. Sir, it is successively, the rupee is depreciating year after year, from minus 8.5% in 2018 and minus 10% in 2022. Sir, depreciation of rupee has got a significant impact on the overall development of the country, sir. Sir, depreciation of rupee has a direct impact on the manufacturing sector, since India is a net importer of raw materials and fuel. These two are very important import, because we completely depend on the fuel imports, sir. Manufacturing growth has already started showing the signs of stress and has slowed significantly this fiscal year. Sir, as per RBI, every 5% fall in the value of a rupee, inflation increases by 15%, 15 basis points, that is 0.15%. Sir, foreign investors, this has another effect of depreciating the rupee, sir. Foreign investors have pulled out 18 billion from Indian markets, more than 12 billion sell-off during 2008 global recessions. Sir, the next issue which I would like to bring to your kind notice is the reality remains that top 10% of the Indian population holds more than 60% of the country's wealth, while the bottom 15% of the population has only 6% of the wealth, sir. Even though the per capita income has more than doubled, that is 1.97 lakh since 2014, India ranks 142nd among 197 countries in terms of per capita income. The last point, sir, which I would like to bring to your notice is widening widening trade deficit, which is again alarming. Sir, India's overall trade deficit reached 122 billion in financial year 2022-23 compared to $82 billion in the previous year. So the government data indicates that India's trade deficit hit a record high in the month of October, and more alarming is, all the more concerning is India's widening trade deficit with China, and historical high of 83 billion in 2022, and is expected to cross 100 billion mark
in 2023 only towards China, sir, from China. Sir, in conclusion, we cannot afford to be complacent and we should take the necessary steps. I request the Honorable Finance Minister, though there are positive aspects, there are also negative aspects in this economic growth. So I request the Honorable Finance Minister to address all these issues and make the economy more strengthened. Thank you very much, sir. Thank you. थैंक यू माननीय वी विजय साई रेड्डी जी। माननीय प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आज सुबह जब पता चला कि इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, तो मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारी पूरी बातचीत टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और वगैरह वगैरह की चीज़ों में रहेगी। अर्थव्यवस्था का वो एक चेहरा हो सकता है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो राज्यसभा और लोकसभा में बैठे हुए हैं, उनके लिए आर्थिक परिस्थिति पे जब हम बात करते हैं ना, तो सर सबसे पहले गरीब की थाली नजर आती है। गरीब की, आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ भी रख लो, लेकिन अगर गरीब की थाली में ऊपर परिलक्षित नहीं हो रहा है, तो फाइल भी किताबी है और गांव भी किताबी। मैं सिर्फ, और हाँ, बहुत बढ़िया कहा जावड़ेकर साहब ने कहा 80 करोड़ लोगों को, हालांकि मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि मुफ्त कुछ नहीं होता है सर। मैं कई बार सदन में बोल चुका हूं, अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है, तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि आर्थिक परिस्थिति क्या है, कितनी समावेशी है, वगैरह वगैरह। सर, माननीय उपसभापति जी, सुधांशु जी जब बोल रहे थे, तालियां बज रही थी सत्ता पक्ष से, बजती भी हैं। अब विजय साई रेड्डी जी को कष्ट हुआ तो उन्होंने कह भी दिया कि ताली क्यों नहीं बजा रहे हो। तो जब सुधांशु जी ताली बजा रहे के वक्तव्य पे ताली बज रही थी, तो मुझे लगा कि गांव शहरों के बेरोजगार पर यह ताली कितनी भारी पड़ रही होगी। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए, तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए थे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। 2 दाहें 20 करोड़। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहां हैं। सर, माननीय उपसभापति महोदय, मैं कुछ चीजें आपके मध्य, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम मानव विहीन और मानवीयता विहीन ग्रोथ स्टोरी के पक्ष में भजन गा रहे हैं, करतल ध्वनि कर रहे हैं? सर, कोई भी वैसा ग्रोथ जो फेसलेस हो, जॉबलेस हो, उस ग्रोथ से देश की हकीकत नहीं बदलती है। सर, बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे थे। अभी पिछले महीने ये खूबसूरत किताब आई है, वेल रिसर्च्ड। आधी किताब में सर रेफरेंस है, ये है अनइक्वल। सर, हम किन देशों से पीछे हो गए हैं पता है? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। ये है सर दस्तावेज, ये अनइक्वल स्वाति नारायण की। बीते दिनों बिहार में एक जातिगत सर्वेक्षण हुआ। मैं चाहूंगा तमाम हमारे भाजपा के मित्र, उनको ना उससे मतलब ना हो, उसके प्रति विरोध हो, लेकिन एक बार उस दस्तावेज को पढ़िए, क्योंकि उन आंकड़ों में नंबर के बाद आर्थिक सामाजिक परिवेश भी जाहिर हुआ है। और तब प्रधानमंत्री जी, पुनः ले जाऊंगा 14 में बिहार गए थे, बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात वो करके आए थे, हाजीपुर, दरभंगा, पटना। सर, बिहार को आपकी जरूरत है माननीय सत्ता पक्ष। बिहार के पास रेवेन्यू के साधन कमतर हैं। बिहार को लेबर सप्लाई स्टेट के नजरिए से मत देखिए। सभी प्रकार के खबरों के लिए जुड़े रहिए सरपंच टीवी के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।